जनाब हाफिज नियाज़ साहब जो खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी लगा रहे थे, जिसकी तवज्जो बेहतर है वो कहे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मुख्तसर से मेरी कहानी है, मुख्तसर से मेरी कहानी है, जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर से मेरी कहानी है, जो भी है बस उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने लिया उनका इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों की बैत खूब जानता है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत गो, और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार खान। सलाम कबूल कीजिए। ग्रेटर इकबाल पार्क में एक वाक़या हुआ जिसमें कहा गया कि एक टिकटॉकर लड़की आयशा इकराम को कोई 400 लोगों ने हैरेसमेंट का शिकार बनाया। मैंने तो खैर उसी के दूसरे दिन एक प्रोग्राम में ये कह दिया था कि इसमें हैरेसमेंट का प्रोग्राम जो बताया जा रहा है, बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों की तरफ से इस पे बातें हो रही थी, लेकिन मैंने उसी दिन ये कह दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है सारा अपनी मफाद, नामनियात, शोहरत और पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल था कि नहीं जी, लड़की बड़ी मासूम है, उसके साथ ये हुआ वो हुआ। तो खैर वक्त ने साबित कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको आयशा इकराम और उसके शुरू में बताए गए नामनियात मंगेतर रैम्बो के हवाले से उनकी कुछ ऑडियो सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इनका मंसूबा इतने बड़े दिन पे क्या था। इनका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाए और उनसे रकम ईंटी जाए, और फिर ये दोनों आपस में जो भी ऐसादारी इनकी तय हुई थी वो उस हिसाब से आपस में तकसीम कर लेंगे। अब जो कुछ सामने आ रहा है, ऑडियो लीक्स जो सामने आई, रैम्बो की आई या आयशा इकराम की आई, उसमें बिल्कुल मेरे ये व्यूज या ये पॉइंट्स जो मैंने पहले दिन बताए थे वो हया हो गए। अब कहा यह जाता है कि इतने बड़े दिन के मौका पे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि पाकिस्तान को बदनाम किया गया। ये बात तो अपनी जगह पे 100% ठीक है कि वाकई पाकिस्तान को बदनाम किया गया और जानबूझकर किया गया, अपनी जाती मफाद के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मजबूरी थी या कोई अचानक हादसाती तौर पे ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ प्लान्ड था। इसमें आप अभी बयान सुनेंगे, आपको सारा कुछ सामने नजर आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्लानिंग में रैम्बो और आयशा इकराम दोनों बराबर के शरीक हैं और दोनों की प्लानिंग में ऐसा भी बराबर है। जो मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हुई आलमी सतह पे,
जो पाकिस्तानी मुआशरे में रहने वाले बसने वाले मर्दों की बदनामी हुई, या जो हुकूमती इदारों की बदनामी हुई, उसको पूछने वाला कोई नहीं। रैम्बो को साजिश करने की बिना पे गिरफ्तार कर लिया गया और आयशा इकराम अभी तक आजाद घूम रही है। अब देखा जाए तो नारा तो बराबरी का लग रहा होता है कि जी हम बराबर के हकूक रखते हैं, तो जितनी साजिश रैम्बो ने की है इतनी ही साजिश आयशा इकराम ने भी की है। जितनी साजिश का ऐसा रैम्बो है इतनी साजिश का ऐसा आयशा इकराम भी है। तो हमारे इदारे आयशा इकराम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जब तक आयशा इकराम को गिरफ्तार करके प्रॉपर तफ्तीश नहीं की जाएगी उस वक्त तक हालात खुलकर सामने नहीं आएंगे और ना ही कोई सबूत उस हिसाब से खुल के सामने आने हैं। तो फिर बराबरी का असूल यहां क्यों नहीं अपनाया जा रहा? ये वही टिकटॉकर हैं जो सबसे आगे होते हैं बराबरी का नारा लगाने में। तो देखते हैं हालात किस करवट जाते हैं, किसको सजा होती है और हमारे इदारे किसके गहरा तंग करते हैं। आप ये इनकी ऑडियो देखिए। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। मुजरिम 6 है 7 है? 6 मुजरिम को अंदाजन कितना मतलब कि अगर समझौते के लिए लिया जाए अंदाजन, क्योंकि ज्यादातर तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ क्या कह रहे हो? अपना नेट ऑन करो पहले। नहीं किया। कौन सी वीडियो सेंड करनी है? क्या कौन सी वीडियो सेंड करनी है? इसका तुम्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट तुम्हें मैंने भेजा है। सेंड करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम नेट ऑन करो, अब देखो बस। तुम ब्लैकमेलर बोलती हो ना मुझे। तो तुम ये भी तो ब्लैकमेल ही कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप ऑन करो फिर बताता हूँ। मैं तुम्हें सेंड करना, तो मैं सारे वीडियो सेंड करना, तो मेरा भी फेस देखी तो तेरा भी, तो ना खेलेंगे ना खेडन पाएंगे। ठीक है, कि तू मैं नहीं ना तू भी नहीं रहेंगे, तो मैं भी अपने आप बर्बाद कर। ठीक है, ऐ चाहनी है ना, तू ऐ चाहनी है ना मेरी प्रकाश खत्म हो रही है। मैं हूं ऐसे टाइम देख तू किथे किथे, मैं भी नाल, तू नहीं है मैं भी हाँ। तेरा जेड़ा सैट है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की नस्लों को क्या सबक दिए जा रहे हैं, ये स्क्रीन पे चलते हुए सीन आप देख सकते हैं कि इसमें हम टीवी ने बहन और भाई की शादी आपस में करवा दी है और बच्चा भी पैदा करवा दिया है। हमारा पैमरा, हमारी नाम निहाद इस्लामी रियासत और हमारे वजीर आजम साहब और सदर साहब ये कहाँ पे सो रहे हैं, जिनको ये सब नजर नहीं आता, उन तक ये बात पहुंचाई जाए और इसका फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए ताकि हमारे आने वाली नस्लों की बर्बादी का जो सफर इन निजी टीवी चैनल्स ने शुरू किया हुआ है और जो खराफात उनके जहनों में डाली जा रही हैं उनसे हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो सकें। इस तरह के चैनल्स को सिरे से बंद कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपने माहा और असद की शादी कैसे कर दी? वो दोनों रजाई भाई बहन है। असद आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या? आर यू श्योर? हाँ, असद और माँ बहन भाई हैं, दोनों का निकाह हराम है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे बताऊं? आप नाना बनने वाले। इस शक को दूर करने के लिए कुरान पे हरफ वाली
our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. My delegation is exercising its right of reply in response to the statement made by the Indian representative. Jammu and Kashmir neither is a so-called integral part of India, nor is it India's internal matter. India remains in occupation of an internationally recognized disputed territory whose final disposition needs to be decided in accordance with the democratic principle of a free and impartial plebiscite under the United Nations auspices as provided for under numerous resolutions of the Security Council. In order to divert attention from ever-increasing international condemnation of India's widespread and escalating human rights abuses in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, India continues to level baseless allegations and rely on outright lie and obfuscation. India's compulsive obsession with Pakistan is neither new nor surprising. It has permeated its ruling elite and governance structures. But there is a method to this obsession, as it underpins India's electoral and foreign policy under the ruling RSS-BJP Hindutva-inspired government. The EU Disinfo Lab has graphically revealed how India has deployed such tools of deflection, deception, and disinformation against my country, including at the United Nations. Mr. President, India's violation of human rights in Indian-occupied Jammu and Kashmir are well documented in the two reports of the High Commissioner for Human Rights. Since 5 August 2019, the High Commissioner has urged India to unlock the situation and fully restore the rights that are currently being denied to the people of the occupied territory. Several special rapporteurs and mandate holders have also termed the human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in a, quote, free fall, unquote. Major human rights organizations, including Human Rights Watch and Amnesty International, have expressed similar serious concerns about India's human rights violation, including in the occupied territory. Not surprisingly, Indian authorities have failed to respond to any of these communications. In fact, a witch hunt has been launched against those who dare to report these crimes. Only last year, Amnesty International ceased work in India, citing constant harassment at the hands of the government. The government of Pakistan has recently released a comprehensive and well-researched dossier containing the
entire range of gross, systematic and widespread violations of human rights being perpetrated by Indian security forces in the occupied territory. We call upon the international community to take cognizance of the compelling evidence and hold India accountable for the heinous crimes. If India has nothing to hide, it must accept a United Nations Commission of Inquiry and agree to implement the Security Council resolutions stipulating a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their right to self-determination. Mr. President, as for India's use of the canard of terrorism, regurgitating stale arguments that are typical of all occupiers, let me emphasize that India itself is the principal perpetrator, sponsor, financer, and abettor of terrorism in the region. Today, India is involved in at least 4 different types of terrorism. First, India is resorting to state terrorism to suppress the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Since 1989, Indian occupation forces have killed more than 96,000 Kashmiris, widowed around 23,000 women, and used rape as a weapon of war and orphaned more than 108,000 children. Second, it is funding and supporting terrorist organizations like the TTP, which are involved in numerous cross-border terrorist attacks against Pakistani military and civilian targets. Over the last decade, thousands of Pakistanis have lost their lives or have been injured as a result of these Indian-sponsored terrorist attacks. Pakistan has shared irrefutable evidence of Indian involvement in supporting and sponsoring terrorism with the international community. Third, India is financing and organizing mercenary terrorist organizations against Pakistan to impede economic growth and prosperity of the region. India's National Security Advisor, Mr. Ajit Dole, has publicly admitted supporting and financing of such mercenaries. The captured Indian spy, Kulbhushan Jadhav, has also confessed to organizing such terrorism in Pakistan. Fourth, India is being guided by a supremacist ideology that has mainstreamed Islamophobia and bigotry against minorities, particularly Muslims, in its political discourse. The RSS is one of the oldest fascist movements in the world, enjoys state protection, patronage, and support by BJP, the ruling party in India. It was RSS which was responsible for pogrom in Gujarat in 2002, which killed over 2,000 innocent Muslim children, women, and men. These anti-Muslim pogroms were later repeated in Mumbai and Delhi. One cannot expect anything new from the purveyor of Hindutva. In today's incredibly intolerant India, the 200 million strong Muslim minority faces frequent lynching by cow vigilantes, pogroms by RSS thugs with official complicity, discriminatory citizenship laws to